विद अनदर लाइव। थोड़ा लेट हो गया आज, बाहर था मैं सुबह से। बिग न्यूज मेरे मेरे हिसाब से, पता नहीं आप लोग को क्या लगता है। कल की जो खबर आई थी, इंडिया स्क्वाड, इट्स 3 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि 22 तारीख को शुरू होने वाला है, यानी आज से तीन तीन दिन बाद। um, I don't know. I'm still a bit confused about क्यों किन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था, किन को रिकॉल किया गया था। I wrote an article also. Let me paste that article here. आप लोग मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हो यहाँ पे। It's my DAFA news column जो है मेरा column क्या है? It's more of a news reaction. Hello निहार, how are you? Welcome back, my friend. कैसे हैं आप? ये वो आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। आप सभी के लिए मैंने ये आर्टिकल पिंक किया। लो जी, ये मैंने डाल दिया। श्री गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभकामनाएं, जय भाव आपको भी दोस्त। गणपति बप्पा मोरिया, आप सभी को मुबारक। हाँ तो देखो, मैंने कहा था पिछले शो पे एशिया कप के बाद कि लोग वी हैव 3 ODIs। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 ODIs हैं, और ये हम सब जानते हैं कि ये आखिरी 3 ODIs हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। 28 तारीख को आपको आईसीसी को अपना फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड देना है, आईसीसी वर्ल्ड कप स्क्वाड देना है। आई एक्सपेक्टेड मे बी समवन लाइक हार्दिक पांड्या टू बी रेस्टेड, लेकिन मैंने कहा था अभी एक लाइव स्ट्रीम पर कि आप इन लोग को पूरी तरीके से छुट्टी, इनको रेस्ट मत दो, इनको स्क्वाड में नेम करो, इनको इंक्लूड करो, भले से आप इनको मत खिलाओ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्लेयर्स कहीं निकल जाते हैं ब्रेक ब्रेक के लिए, एंड देन इट्स टू क्लोज टू वर्ल्ड कप टू इंटायरली स्विच ऑफ। ये बस मेरा मानना है। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, बट आई वुड हैव रादर हैड लाइक दे हैव डन ना। बेसिकली उन्होंने क्या किया, 2 ODI के लिए एक स्क्वाड किया, और फिर आखिरी वनडे के लिए कुछ और प्लेयर्स को डाल दिया। जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या मैं समझता हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या का इतना बड़ा रोल है दोस्तों, very very big role in the World Cup as an all-rounder. We saw how good he was against Pakistan, getting that ET7. We saw how good he was with the ball throughout the series, getting बाबर आजम। मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में कहा था कि हार्दिक पांड्या ने जो गेंद डाली बाबर आजम को, उनको जो क्लीन बोल्ड किया, it's probably the ball of the tournament, and then we saw him take 3 for 3 in the final against Sri Lanka. तो इनका योगदान तो रहेगा, तो maybe he could be rested. Why Rohit Sharma needs rest? Why Virat Kohli needs rest? Why Kuldeep Yadav needs rest? हाँ, आप कह सकते हो कि वो इंडिया का इकलौता स्पेशलिस्ट स्पिनर है वर्ल्ड कप में, बट नो, द गाय इज डूइंग वेल। और हम सब जानते हैं कि कुलदीप इज अ कॉन्फिडेंस बॉलर। कुलदीप जब मार खाते हैं या इनका ऑफ डे होता है, इनको 2-3 मैच लगते हैं वापस रिदम में आने के लिए। सो गिविंग कुलदीप यादव 3 मैचेस, इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ऋतुराज गायकवाड, एक कमेंट भी आया था, ऋतुराज गायकवाड यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। डज दैट मीन कि ही इज आल्सो नाउ इन द फ्रे फॉर द वर्ल्ड कप? श्रेयस अय्यर का नाम है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। इट्स अ स्ट्रेंज वन। आई टेक सम कमेंट्स, मैं कमेंट्स में आता हूं। रविचंद्रन अश्विन, आपको बता दो दोस्तों कि रविचंद्रन अश्विन ने जनवरी 2022 से कोई वनडे नहीं खेला, यानी कि 18 महीने हो गए कि अश्विन ने एक वनडे मैच खेला। उससे पहले दोस्तों 2017 से लेकर जैन 2022 तक अश्विन ने एक वनडे मैच खेला भी नहीं, यानी कि 4.5 साल तक रविचंद्रन अश्विन वाज नॉट deemed a one-day player by the selectors or the team management. अचानक उनको साउथ अफ्रीका टूर के लिए at the start of last year, यानी कि जैन 2022 में उनको इंक्लूड किया गया था। वो 2 मैच खेले, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक मैच में उनकी बैटिंग आई, 1 मैच विकेट, एंड 1 मैच he went wicket-less. So basically you're looking at a player who since 2017 has just played 2 ODIs. Now अचानक अक्षर पटेल के चोट के कारण, या अक्षर पटेल और जडेजा की काफी खराब बॉलिंग के कारण टीम को लगता है यार हमें अभी अश्विन की जरूरत है। बट I'm a big fan of Ashwin. You know my live streams. I have a lot of time for him. I think he's a legendary. He could be on the way to smashing some more records as a Test all-rounder. लेकिन वन डे फॉर्मेट में, T20 फॉर्म में अश्विन ऑलराउंडर नहीं है। वो टेस्ट फॉर्मेट में कायदे से नंबर 1 ऑलराउंडर, लेकिन जहां बात वनडेज की हो खासकर और T20 के, यहाँ पे ये एक बॉलर है जो थोड़ी बैटिंग करते, ही इज अ बॉलर। और क्योंकि वो पिछले 7 साल से 2 ही वनडे मैच खेले हैं, ये अचानक अब आपके नंबर 1 स्पिनर नहीं हो सकते। इन थियरी, विथ हिज टैलेंट, हिज स्किल, विथ हिज ब्रेन, भाई साहब क्या दिमाग है बंदे का। अश्विन से नॉलेजेबल शायद आजकल कोई क्रिकेटर नहीं है स्टीवन स्मिथ के अलावा, सो अश्विन विल ऑफ कोर्स ब्रिंग वैल्यू टू एनी इंडियन टीम। मैं उनको कम नहीं समझ रहा हूं। अश्विन ब्रिंग्स अ लॉट, बट द पॉइंट इज कि जो खिलाड़ी एक फॉर्मेट 7 साल से नहीं खेल रहे हैं, अचानक ये समझना कि वो आके वनडे फॉर्मेट को पकड़ पाएंगे, वनडे रिदम पकड़ पाएंगे, मेरे हिसाब से ये सही थिंकिंग नहीं है। इफ यू डिसएग्री,
प्लीज शेयर योर व्यूज व्हाई यू थिंक अश्विन. अब हम सब जानते हैं कि अश्विन का 3 मैच की श्रृंखला में आने से ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन इट वुड नॉट सरप्राइज मी एट ऑल इफ सडनली अश्विन कम्स इन. रोहित ने कहा था एशिया कप फाइनल के बाद कि फोन पे बात हो रही है बिकॉज नाउ अक्षर पटेल इज इंजर्ड. लेकिन अक्षर पटेल काफी सफल रह चुके हैं पिछले 2 साल में. द नंबर वन स्पिनर आफ्टर कुलदीप यादव, जिनके पास बहुत विकेट हैं, आफ्टर चहल, द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन स्पिनर इन द लास्ट 2 years. मैं आंकड़े आपके सामने मैं करता हूं. इट्स एक्चुअली वॉशिंगटन सुंदर. ठीक है, पिछले 2 साल में दोस्तों T20 bowling में here are India's figures. Kuldeep Yadav has 43 wickets. Chahal has 24 wickets. The next successful Indian spinner in one days in the last 2 years is Washington Sundar, who's got 15 wickets. Akshar Patel has 14 wickets, and Jadeja, on form, the poorest of the three, has 12 wickets. लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि जडेजा रेपुटेशन के बेसिस पर वो वर्ल्ड कप जाएंगे, कायदे से अक्षर पटेल हैज बेटर स्टैट्स बैटिंग एंड बॉलिंग इन द लास्ट 2 years. तो कायदे से अक्षर पटेल को इंडिया का वर्ल्ड कप 11 में पहले आना चाहिए जडेजा से. बट बिकॉज जडेजा इज अ सीनियर प्लेयर हु अचीव फॉर मोर in the longer scheme of things, he will play. But अचानक आपने कुलदीप को रेस्ट किया और अश्विन को लाए. It sends mixed signals to me, right? Not just because Ashwin has played 2 ODIs in the last 7 years. If you thought he was good, if you thought he was valuable, आपने उन्हें 2017 से 2022 तक ड्रॉप क्यों किया? और अब 18 महीने बाद आपने उनको क्यों इंक्लूड किया? You have a younger, again, I'm not comparing. Ashwin is a legend across formats in my mind. वॉशिंगटन सुंदर अभी 22-23 साल के हैं, वो बच्चे हैं उनके सामने, लेकिन कम से कम वो पिछले 2 साल में 15-16 वनडे खेल चुके हैं. उनको वनडे गेम की फील है. वो एक अच्छे बैट्समैन है, अश्विन से बेहतर बैट्समैन है. वाइट बॉल क्रिकेट में वो फ्लोट कर सकते हैं, वो छक्के चौके लगा सकते हैं, और वो एक लेफ्ट हैंडर है. तो उसी वॉशिंगटन सुंदर को जब आपने रातों रात उनको श्रीलंका बुलाया, आपने उन्हें फाइनल में खिलाया, अचानक आपने अश्विन को उनके साथ डाला. आई एम जस्ट सेइंग आई फाइंड इट वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, बिल्कुल फील्डिंग कौन करेगा ऐश की जगह? आप इन्हें फील्ड पे कहां छुपाओगे? लेट्स टेक सम क्वेश्चन. आई थिंक अ लॉट हैज गॉन ऑन. Arpit saying it makes no sense to keep Hardik, Rohit, and Virat out of series. Hardik, I can say because he's a fragile all-rounder, maybe rest him, but Rohit and Virat should have played. I think Virat Kohli needs more time in ODIs. Ash के स्क्वाड में आते ही सुंदर का पत्ता कट जाएगा अगर अक्षर फिट नहीं होता. बिल्कुल सही कहा. क्रिकेट सूर्य विक्रम सिंह is what's the sense of including Ruturaj and Tilak? Ruturaj, no sense. Tilak Verma, maybe, like my hunch is that Iyer is not fit. But because you already had Tilak as part of the Asia Cup squad, maybe you want to play him on the off chance that Shreyas Iyer doesn't pass fit. That makes sense. He's a lefty. He's younger. He's a good fielder. He can bowl off spin. But Ruturaj Gaikwad, जो Asian game में captaincy करेंगे, उनको क्यों लिया? I don't know. Shikhar Singh is saying not taking risks with Bumrah are correct. I agree. But the thing with Bumrah is he's still not bowled more than 5 overs in the 3 ODIs he's played. So I would have liked to see, can Bumrah, going into his most important World Cup ever, can Bumrah bowl 10 overs? We still have not seen the evidence कि Bumrah दूसरे स्पेल के लिए आ सकते हैं. जो 3 मैच उन्होंने एशिया कप में खेले, उन्होंने 5 ओवर से ज्यादा नहीं फेंके और सारे 5 अप फ्रंट आए, यानी कि पावर प्ले. Do we know whether Bumrah's body can take 50 overs? There's no evidence yet. So I would have liked to see Bumrah play at least one of these matches. But yes, Hardik Pandya could be rested. Good morning, Nomad Tibet, my friend. Kaise ho? Ashutosh, my 11 for 2 ODIs. Gill, Ishan, Tilak, Shreyas. Tilak at 3. Interesting. Shreyas, I hope he fits. KL, Rahul, Sky, Jadeja, Sundar, Shardul, Shami, Siraj. Shardul, yes, Shami needs game time. Siraj, despite his brilliant effort, needs to keep playing. Sky. Yes, Sky should play because in the World Cup, whenever he's called on to play that odd game, he would need to have some form. So, ठीक है, सही है. Shubhajit, yes, Shubhajit, where's your comment gone, Shubhajit? In case Akshay unfit before the World Cup, would prefer Ashwin in the team rather than Washington experience. Again, not just you, Shubhajit, a lot of you talk about experience. Yes, he's played what? Ashwin has played 113 ODIs. But what good? And please feel free to correct me. I'm not belittling Ashwin here. मैं उन्हें बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेटर मानता हूं, लेकिन वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस किस काम का है जब पिछले 7 में आप केवल 2 वनडे मैच खेल चुके हो. Experience means yes, he can call on things, but you need to be playing a format. When you've only played in that format twice in the last 7 years, does experience really matter? I would much rather have a younger player who's been playing one-day cricket in the last year. And let's face it, Washington Sundar has played 15 one-days in the last 1 year. So I don't know. Ashwin's inclusion just doesn't make sense to me. And
Would love to hear counter arguments. Kiran, welcome back. Rohit and Virat didn't play a single match in AUG. Yes, correct. Rohit batted 3 जगह matches and still getting tested. Indicates why players pick and choose. बिल्कुल ही इसी बात को लेकर Virat Kohli does not have enough one day batting time, one day practice as you would want of a player of his level going into the World Cup. ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है. हो सके अगर वो फिट रहे एक और खेले. मेरे हिसाब से मैं बहुत बार कह चुका हूं, मेरे हिसाब से विराट कोहली 500 रन 550 रन इस वर्ल्ड कप में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वनडे की फील की जरूरत है. और उन्होंने वेस्ट इंडीज में तीनों मैच नहीं खेले. मार्च के बाद उन्होंने नहीं खेला कोई वनडे अब तक until the Asia Cup, and barring one innings, he didn't look very good. So I would have liked to see Virat Kohli play all 3 matches. That's just my take on the case right now. Shaktiman, Jay Bhai, if Moeen Ali could come back and perform so well, why not Ashwin? Because Moeen Ali was not out of cricket for 7 years. Ashwin was away from one-day cricket for 7 years, right? Barring 2 matches. Moeen Ali plays every single T20 league, PSL, CPL. वो leagues खेलते हैं, वो one-day का हिस्सा रह चुके थे, and he came back for Test cricket. He did not come back. He did not come back after 7 years for Test cricket. He was playing Test cricket for 2 years ago. He was consistently part of England's one-day team and T20 team. Ashwin is only part of the Test team, and Ashwin did not even play the World Test Championship. When was Ashwin's last Test match? West Indies. You cannot be saying that if Ashwin plays 5 Test matches a year and doesn't play ODIs for 7 years, that makes him a T20 player. It's utterly nonsensical to me. ऋतुराज को क्यों लिया टीम में? आई डोंट नो, सबको पता है. हाँ, अगर आपको किसी को लेना है तो आप संजू को लेते. एटलीस्ट संजू ने इस साल कुछ तो किया वनडे मैच में. Sagar, I think we should use the series as warming up for the backups. Correct, but that doesn't mean you just drop 5 players. No, विराट को कहाँ, विराट के पास मैच प्रैक्टिस कहाँ है, मैच फॉर्म कहाँ है? एक ही 100 मारा उन्होंने. कुलदीप यादव इज वी ऑल नो कुलदीप यादव तभी अच्छी बॉलिंग करते जब कैप्टन उनको कॉन्फिडेंस देता है और वो खेलते रहते हैं. 3 मैच वो बाहर रहेंगे और फिर मान लो एक मैच में वर्ल्ड कप में वो पिट गए, उनकी कॉन्फिडेंस लो रह जाएगी. सो आई जस्ट डोंट सी why was Kuldeep Yadav rested from Friday's match against Bangladesh? Just to my mind, strange. जिसको रेस्ट करना है वो बुमराह है और वो हार्दिक पांड्या है. Why Kuldeep Yadav? He's a spinner. Exactly, Harpreet. Why is Ashwin included? Like I said, read my article. I put the article there. I'm saying on this stream, Ashwin selection makes no sense to me. Fielding कौन करेगा? बिल्कुल fielding कौन करेगा? Kohli should have played all matches. Bilkul Karan. Kohli should have played all matches. Is Ishan a reserve opener or a middle order option? He's both. Bichara, they've mind blanked him so badly. He's both now. England and Aussie former players were saying India is their favorite. This is some kind of mind game because I remember 2019 World Cup and WTC they were saying that too. देखो foreigners इंग्लैंड और ऑजी वालों की बात मेरे भाई मत मानो. इनके माइंड गेम्स चलते रहेंगे. इनकी बातों पे विश्वास मत करना. Glad we're not making the same mistake as Park and resting some vulnerable players. Correct. Bumrah and Siraj will be rotated, and Shami and Shardul should play all 3, but you have to feel for Sanju Samson. Very correct, very accurate comment from Ashutosh. मैंने तो जब अश्विन को एनसीए में देखा तभी समझ गया कि टीम में आने वाला है. But you think Washi is a wicket taker? Washi is not going to run through teams, but when you're the third most successful spinner in one day in the last 2 years, when your economy is under 4.6, when you're offered that power play role, और सबसे बड़ी बात है इस इंडियन टीम को तलाश है, भूख है, जरूरत है एक लेफ्टी के, और वो लेफ्टी राइट आर्म ऑफ स्पिनर, युवा प्लेयर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. इनके वनडे आंकड़े भी डिसेंट हैं बैट के साथ. look, for me it just comes down to, it's not about, I'm not comparing सुंदर बच्चा है, अश्विन यहां है, लेकिन 7 साल में 2 ODIs और 2 साल में 15 ODIs. I want the player who's in touch with one day cricket, who's a bit younger, who's not a liability in the field. इसीलिए I would have gone for Washington Sundar, like I've said in the first place, over Akshar Patel and Jadeja. You don't need 2 left-hand spinners. Washington Sundar is also a left-hand batsman, just like Jadeja, just like Akshar, but he's a righty. He takes the ball away from the left-hander. If an off-spinner has to come into the World Cup team, to my mind, it's no discussion. It should be Washington Sundar. Hello, Vinat. What do you think about Ashwin? I've already said my piece. Nope. That's what I've just said. I think you've already asked the question. You've asked the question that I've answered 3 times. If Ashwin's included, yep, exactly, Sagar, same thing. Did Kohli and Rohit request for rest, or was it the selector's decision? This was the selector's decision. Can someone please point out what politics was done to Shikhar Dhawan? I don't think there was any politics done. If you have any inside cover, please let me know. It was no politics at all. It was a very obvious exclusion. Chahal could have been picked instead of Ashwin.
Uh, there is logic to that, Nihar. अगर आप मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव की जगह वेस्ट है इस वर्ल्ड कप में, आपके पास बैटिंग ऑप्शंस एक हैं. यू नीडेड अ सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर टू अकम्पनी कुलदीप ऑन द ऑफ चांस कि कुलदीप का फॉर्म, कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप के बीच गायब हो जाए या तो उनको चोट लग जाए. व्हेन यू ओनली हैव वन स्पेशलिस्ट स्पिनर एंड यू हैव थ्री स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, you still need that one bowler, maybe a leg spinner. um I'm not, I'm a fan of Chahal. I think between Chahal and Kuldeep, Chahal बहुत उनसे आगे बॉलर है, इनके पास बहुत ज्यादा स्किल है, वैरायटी है, लेकिन क्योंकि उनकी बैटिंग कमजोर है, वर्स देन कुलदीप्स. एंड बिकॉज जब से रोहित शर्मा कप्तान आ चुके हैं, और ये बहुत बार कह चुका हूं अपने शोज पे, या तो रोहित शर्मा को चहल पसंद नहीं है, या तो रोहित शर्मा को आइडिया नहीं है कि चहल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. जो भी कारण हो, it's unfortunate that Chahal is not in the World Cup squad. I would have preferred him over Sky, because Sky is not going to do much. Between Sky getting one game and batting at 6 and probably not doing much, and Chahal maybe playing 2 or 3 matches as a backup specialist spinner, I would have gone for Chahal. If Ashwin bowls proper off spin with occasional dusra or straighter one, then he is good. If he goes on experimenting once in 3 balls, then it becomes a liability. Also a valid point, but I just don't see how a bowler who's played 2 ODIs. What is this World Cup? Is this a T20 World Cup? Is this a WTC Championship? No, this is a World Cup, something you've not won for 12 years. And if you actually दिल पे हाथ लगाकर, अगर इंडियन टीम कोच और कप्तान एक्चुअली ये वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, तो क्यों ये अश्विन पे गए, ये मेरी समझ से बाहर है. Again, I'm not belittling Ashwin. I have a lot of time. I am a massive fan of Ravi Ashwin. मेरा बस ये गट फीलिंग है कि जिस इंसान को आपने 7 साल तक वनडे टीम से बाहर किया, अचानक आपकी नजरों में उनकी वैल्यू कैसे आ गई. अनुभवी है, अगर है तो पिछले 7 साल से आपने उनको क्यों नहीं खिलाया. If you valued him, why did you drop him very unfairly, I must add, in 2017, like this, after one Champions Trophy defeat? You disrespected Ashwin back then. You did not value his experience then. और 7 साल के बाद आपको उनकी याद आ गई. Galat thinking. And this is why Ashwin's recall, just like dropping Ambati Raidu and bringing Vijay Shankar out of the blue, was a blunder 4 years ago. Bringing back Ashwin now, after 7 years out in the cold, to my mind, is a blunder. And I'm surprised कि बहुत आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं. If Rohit Virat wanted rest, then why include them? Bilkul, it doesn't make sense. Keep them in the squad for all three and then internally choose what to do. Why B said always engage the senior season quota close to World Cup? Really, I don't know. Pranav Kere, Ashwin can be a good defensive option. It's one-day cricket. You don't need defensive options. You need wicket takers. Strange comment. Anyways, I like this team. Ashwin's presence does matter. ठीक है सर, इस बार तो आप मुझे 2 बोतल तो आप भिजवा रहे हो. अश्विन वर्ल्ड कप में आएंगे और जब ये टीम हार जाएगी ना, आप मुझे याद करेंगे. मिस्टर पॉल राज. Every team has taken leap of faith. If England drafted Stokes ने खुद कहा था मैं हमेशा वापस आने वाला था. मैंने मीडिया के साथ ये किया था ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना चढ़ जाए. Getting Stokes is not a leap of faith. Getting Stokes was planned all throughout, and the way they went and begged him to come back also. Brook is a leap of faith, yes. But this is all planned. Australia have experimented with Hardik, Tim David, Nokia out, Kutsi in. Nokia injured. Williamson has ticked every box. I get your point though. I get your point. But if you're trying to get me to say that Ashwin is a leap of faith, you won't, my friend Achutosh. India has poor chasing side in recent years. This could have been good stage to do that versus Australia, but their resting players, KL Rahul फिर से troll होगा बेचारा. केएल राहुल ट्रोल तो होगा बिकॉज उनको जिस इंसान ने अंडर 14 अंडर 15 लेवल के बाद से किसी की टीम की कप्तानी नहीं करी, और इनकी कैप्टनसी क्या है वो तो हम सब देख चुके हैं. जिस भी पंजाब फ्रेंचाइज को उन्होंने लीड किया, उस टीम की हालत खराब हुई. लखनऊ के साथ इनका फिर भी ठीक ठाक रहा, बट इट्स वेरी क्लियर टू सी कि केएल राहुल इज नॉट a natural captain. He's a burden captain. Why you made that poor man a captain? He's just come back after 5 months. He's batted well. He's kept decently well. Now you made him captain. You were setting him up to be trolled. राहुल धावर ने बोला कि रोहित नहीं है फर्स्ट ओवर, इसलिए ऋतु शायद थर्ड ओपनर. थर्ड ओपनर होता क्या है भाई? थर्ड ओपनर वर्ल्ड कप के लिए ठीक है, एक बायलैटरल 3 मैच में थर्ड ओपनर क्यों?
Was it a good idea to host Australia in 3 match series for the World Cup? It was. This is part of a FTP. This is part of a new FTP. You have to honor it. You need to be tested to my mind, by the World Cup favorites. And let's face it, Australia by far are the World Cup favorites. It's a golden opportunity for Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Hardik. I'll put in the rested category, Kuldeep Yadav, to test themselves. क्योंकि इंडिया का देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टॉप टीम भेजी, ऑस्ट्रेलिया ने हल्की टीम यहां भेजी, ऑस्ट्रेलिया टीम ने हल्की टीम नहीं भेजी। ये इनकी वर्ल्ड कप टीम है जो ये 3 मैच खेल रहे हैं। ये हमारी वर्ल्ड कप टीम है नहीं, हमारे 4 प्लेयर तो रेस्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया और प्लेइंग द टफेस्ट टीम, क्योंकि इनको पता है कि भैया चेन्नई में हमारा पहला मैच इंडिया से है, राइट? एंड हियर इंडिया बिफोर ऑस्ट्रेलिया और रेस्टिंग फोर देयर प्लेयर्स। बिजार लॉजिक मैन। Pura comment pad lo. You need someone defensive to operate as a strike bowler. You can't always attack. You have Jadeja. Jadeja is defensive, right? Akshar is defensive. Washington is defensive. Your only attacking bowler is Kuldeep Yadav. So you want to add a fourth defensive bowler. Jadeja is not attacking. Jadeja is defensive. 10 overs, 35, 1 wicket. That's defensive. Attacking bowler is Kuldeep Yadav. Might go for 60 runs, but it'll get you 4 wickets. You have 3 very basic stump to stump defensive bowlers. Ginadu phir se. Akshar, Washington, Jadeja. These are defensive bowlers. You want Ashwin now on top of that. World Cup bhul jao, mere dost Pranav. Samson is not selected because of 2 keepers and Chahal just don't have the captain's face, and batting the 8 is keeping Chahal or the 11. Yes, but Chahal should have also improved his batting as well. So, look, like I said, Chahal should have been here over Sky, because you will, if you have to pick one of these 2 players, like Sky, who is your 15th World Cup member, or Chahal, who could have been your 15th World Cup member, between them, if you had to say, हाँ इनमें से एक player शायद 2 या 3 मैच खेले वर्ल्ड कप में, तो मेरे हिसाब से वो चहल है, स्काई नहीं है। Why Rahul is first choice keeper over Ishan? क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ है, इसलिए। Do you think India can experiment Kishan as opener in World Cup? Oh, they're definitely doing it. एशिया कप में उन्होंने किया था। बेचारा ईशान किशन का प्रॉब्लम ये है कि वो एक दिन ओपनिंग करेंगे, 3 दिन बाहर रहेंगे, जब वापस आएंगे तो ये 4 पे आएंगे। It's just the nature of Indian cricket these days. But to his credit, he's done pretty well. So unfair, but he could be your third opener. He could be your number 4. Who knows? Swapnil Mishra, if Surya doesn't perform well in Australia, then will he be dropped? No, Swapnil, he will not, unless they see Ashwin coming in as that backup spinner. I still think the long rope that Sky has been given. Look, by the end of this Australia series, Suryakumar Yadav will have played 30 one-day matches. In those 30 matches, if he manages in the last, yani in 28, 29, 30, in these 3 matches, if he manages to hike his average up from 24.7, and if he plays 2 decent knocks, and by decent, I'm not talking like, 24 or 29, 30. No, he needs to get 250 plus scores, maybe a 50, maybe a 60, maybe a 70 in these 3 matches to go into the World Cup feeling secure. If he fails, and remember, what happened the last time Australia came to India for 3 one-day matches in the month of March, just before the IPL? Suryakumar Yadav got 3 golden ducks. Mitchell Starc got him twice. And the third match, Ashton Agar. Ashton Agar. I am not even talking about Adam Zamp. I'm talking about Ashton Agar. Like Akshay Patel, like Jadeja, like Washington. He's a restrictive, containing bowler. He bowled Suryakumar Yadav first ball. So if you're looking at parallels, there's enough evidence this year against Australia in the same conditions. Sky got 3 golden ducks. I'm not saying he's going to get 3 golden ducks, but I'm keeping my expectations of Sky, who, to his credit, has done decently well when you consider how much he's been shuffled up and down the order. But the point is, he does not have one-day batting stats deserving of being a member of India's World Cup squad. Will the neighbors include Abrar? I still don't think so. They should. I think he looks good in test matches, but I still don't think so, sir. Rohit can pull his hamstring out of the blue. Virat has back issues. Ashutosh, best to rest for just 2 ODIs. Point hai, but I would rather them, especially chalo, Rohit has done enough. Virat, to my mind, just doesn't have enough quality one-day batting practice going into the World Cup. Had it been the Asia Cup, I'm fine, but it's the flipping World Cup. 12 साल से Indian team World Cup नहीं जीत पाई. ये time नहीं है 4 players को rest करने के लिए. Nomad Tibet, shukriya my friend. Super chat, love you from New York. Why India always says we're going to play attacking cricket, majority are trying to play defense cricket. भाई बहुत सही सवाल आपने पूछा है. We saw this all through 2022. Rohit Sharma said we want to play attacking cricket. He didn't do anything in the Asia Cup. He said we want to play attacking cricket at the T20 World Cup.
India's combined opening pairs, यानी कि Rohit Sharma and KL Rahul collectively had the slowest strike rate inside the power play of all major teams in the T20 World Cup. So Rohit is now accustomed to saying big things, and unfortunately, he doesn't have the skill or the teammates to back it. India's openers did not do well in last year's Asia Cup, which is why it's a big reason why the team didn't reach the final. और उसके बाद जो रोहित ने कहा था कि we want to play attacking cricket, then why were you and KL Rahul the slowest power play team in the T20 World Cup? Yeah, good question, Nomad. Thank you. Vineet, after the World Cup, would you want the Indian team to stick with a keeper who can open the innings like Ishan or a keeper who can finish the innings like Jitesh or Samson? It's a good question, and I'm going to go with someone who can finish it, Vineet. That's my answer to you. ऋषभ कह रहे हैं रोहित को चहल पसंद नहीं है लगता है ना भाई ऐसा मैंने कई बार सुना है चहल के टिकटॉक एक्सेट्रा एक्टिविटी पे कमेंट करते हुए रोहित को मैंने वीडियोस में देखा है कि रोहित पसंद नहीं करते हो सके कुछ तो है कि चहल रोहित के अंडर ज्यादा नहीं खेलते ना क्षितिज what do you think about Pakistan? Will they be able to get out of the dressing room turmoil? I think it's not the first time the dressing room has been a problem going into a World Cup. But Naseem not around, Haris Rauf in doubt, batting too reliant on an inconsistent Babar. Babar has a lot to prove in a World Cup. I just think they might be lucky to finish sixth out of all the World Cup teams. Nihar saying KL Rahul gives some vibe of Dravid as keeper. Ishan should be keeper. Absolutely, Ishan Kishan should be keeper. I agree. क्या इस समय ठीक वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम से कैप्टनसी छीनना ठीक होगा नहीं भैया ही टू हिज क्रेडिट ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सक्सेस टू द टीम नहीं क्या इसे टीम में खटास नहीं बढ़ेगी बाबर आजम कहीं नहीं जाएंगे बाबर आजम बहुत साल तक कैप्टनसी करेंगे जो रूट इज सिलेक्टेड इन इंग्लैंड स्क्वाड यू सीइंग हिम प्लेइंग इन स्टार्टिंग 11 आई थिंक ही इज अ गुड बेट ऑन टर्निंग ट्रैक्स again like Ravindra Jadeja, I think Joe Root is in England's World Cup squad based on reputation. For a long time, he was a fantastic all format batsman. He was very good in one day. Aajkal inka kharab time chal raha. We saw him. He struggled against New Zealand. But I think because of the seniority that he owns, rightfully, and like you said, he could be that game changer on turning tracks. Plus, he bowls very, very handy off spin. He's a little more than a part timer. So I think Joe Root will play majority of the matches. Yes. Swapnil Gaya, the only attacking cricket is when their bowlers learn how to bat. Correct. Mr. Paul Raj, make your World Cup squad. Sir, मैंने अपना World Cup squad तो बहुत पहले शेयर किया. वही World Cup squad है जो चुना गया. So nothing new there. Playing 11 I've shared before, but since you were not there on those streams, I will name you my 11 for the first match against Australia. Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj. Is Dravid reason for India's defensive cricket? I don't know, Rohit. I don't think a coach का इतना बड़ा influence हो सकता है team पे. Because after all, team does what happens on the field is mainly the captain reacting. You know, cricket is also about reacting. I don't know. I think aggression के नाम पे इन्होंने कुछ गलतियां करी पिछले साल एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सीरीज में बांग्लादेश सीरीज में जहां पे ये हारे तो आई थिंक जब भी ये ज्यादा अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं they actually end up losing more. They tried aggression in the Asia Cup, it didn't win. अग्रेशन के नाम पे पता नहीं कौन सी फालतू क्रिकेट इस टीम ने खेली वहां पे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में they played a mixed thing. Okay, चलो that was a unfair situation because the rain wreaked havoc to the series. But then look at that Bangladesh series. And they tried to be aggressive and they lost the series to Bangladesh. I don't know if is it defensive? Is it too aggressive? Is it confused? I don't know, Rohit. I just think it's a bit of a muddled approach to one day, maybe an outdated approach to one day cricket. With so much worry about long tail for so long, doesn't say a lot about the top order we're picking. It shouldn't be a top order we picked who's good enough to score. Again, the top order has scored the majority of the runs. If you see it, it's the middle order which has been a bit inconsistent because KL Rahul was missing. Hardik Pandya's form was up and down. You don't expect an opener to always bat out 50 overs, right? If two openers can give you 30, 35 overs, I think that's good enough. I mean, Shubman Gill is the leading run getter across the format this year. He's closing in on 1,700 runs. So he can't be faulted. Rohit Sharma's got a lot of good 50s. I don't think he should be faulted. Virat Kohli still got some good runs.
The problem starts when Iyer is missing for 5 months, when Rahul is missing for 5 months, then your middle order falters. So I think it's more about the middle order not being what it should be. In a perfect world, you'd have Rishabh Pant, you'd have Shreyas Iyer, you'd have KL Rahul, right? And that's a much better middle order. So tail is being exposed early on because not so much the openers, but it's more about the middle order. Of course, there have been certain matches where openers have failed and the middle orders failed, but I would not put the blame entirely on the top order. If anything, India's top order, stats wise, has been the biggest factor this year. Ashutosh, out of context, is India going back to the original plan of Pant as red ball, KL as ODI, and Hardik as T20I skipper? It's a good question, my friend. Pant, to my mind, will definitely lead India in the not too distant future. If KL Rahul leads India in any kind of format, unfortunately, that's a disaster because, like I said, since the under 14, under 15 level, he's never captained any serious team. He tried in the IPL, it didn't work out. Whoever gave KL Rahul the leadership role in the Indian team should be sacked because KL Rahul, it's very obvious he's just not a captain. He's not a leader. He gets bogged down. He struggles, and I really feel bad for him. I think giving him the captaincy, you will see it'll take a toll on his batting. So Hardik will lead in T20s. Hardik will probably lead in ODIs, and Pant will lead. But KL Rahul, like I said, he shouldn't be given. It's unfair to expect him to captain. SS98 is back with his 11. Gail, Ishan, Iyer, Rahul, Sky, Jadeja, Sundar, Ashwin, Thakur, Shami, Krishna. ठीक है. Don't agree with it, but I see where you're coming from, my friend. Can Labuschagne make it in squad in place of Head? Yes. If Travis Head, and we all know he's out for at least a month, Labuschagne को तो आना ही पड़ेगा. क्या बैटिंग करी बंदे ने यार. आपकी सोच नेगेटिव है. ठीक है जी. 350 रन अगेंस्ट पाकिस्तान अग्रेगेट क्रिकेट खेल की. हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि वो नहीं खेल रहे हैं. खेले हैं बेहतरीन क्रिकेट भाई. मैंने इतनी तारीफ की उस मैच की. आप शायद वहां नहीं थे. मैं कह रहा हूं लंबे समय तक एक आध मैच में चले हैं. श्रीलंका के सामने जैन के महीने में त्रिवेंद्रम में टीम ने 390 बनाए. न्यूजीलैंड के सामने टीम ने बहुत रन बनाए. लेकिन ओवरऑल जहां टूर्नामेंट्स की बात हो वहां पर मेरा ये मानना है, ये मेरी रीडिंग है कि अग्रेशन के नाम पे टीम ने रायता फेल दिया. अग्रेशन के नाम पे एशिया कप में आपने बहुत अर्ली विकेट्स दिए. T20 वर्ल्ड कप में आपने अग्रेशन के नाम पे आपने अर्ली विकेट्स दिए. तो टीम कमेंट था कि क्या ये टीम डिफेंसिव है. मैंने कहा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये टीम डिफेंसिव है. मुझे लगता है ये टीम ज्यादा अटैकिंग है. थोड़ा टेम्पर करना पड़ेगा. राइट. तो दिन आएंगे जब आप 400 बनाएंगे. लेकिन दिन ऐसे भी आएंगे जहां आप अग्रेशन के नाम पे आप श्रीलंका के सामने 213 पे आउट हो जाएंगे. मोनिका जी, when Hardik gets injured during the World Cup, we'll not have a sixth bowling option. You'll have plenty. You have Akshar, you have Washington Sundar, who will probably come in. You'll have a bowling option. If you include another bowling, our batting will become weak. But still, man to man, Ishan Kishan is a good option to have coming in off the bench. You have Sky. I just think in case Kuldeep gets injured or Kuldeep loses his confidence, which let's face it, it can happen overnight. You will need a quality specialist spinner. आपके पास जडेजा है, आपके पास अक्षर है, आपके पास कौन है आपका तीसरा? Washington Sundar might come in, but I just think you will need a specialist spinner. Maybe a Chahal. Chahal has at least got one-day form. Ashwin has not played a one-day match for 18 months, so I don't see how he comes in. That's it. If KL fails in the Aussie series, most likely he will. Shouldn't he be dropped? No. He won't be dropped, sir. He occupies. मैं बहुत बार कह चुका हूं, KL राहुल इस देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सर. जितनी faith इस टीम को है उस बंदे में. Look, they delayed the Asia Cup squad to make sure he got 3 more days. He got 72 hours. KL Rahul is the most important player in this team, despite the fact that he was not in the 11 for that Pakistan match. But keeping decently, scoring 100, KL Rahul is not going anywhere. He has such faith that they made a very obvious non-leader into the captain for these 2 matches. Sir, वो कहीं नहीं जाएंगे. Crick Maniac, hello my friend from Singapore, Malaysia. कहाँ से हो आप? मैं भूल गया. Malaysia, हाँ. Nothing much to comment on ridiculous selection. Just want to stay strong, Indian fans. सही है भाई. Keep the faith. Keep the faith. I think Australia will go for setting target to 350. सबको पता है भाई. I don't think India is ready for it. You just say India is playing. India overall has been playing a brand of outdated cricket. Experts have said this. Ravi Shastri has said this. Sunil Gavaskar has said this. Sanjay Manjekar has said this.
Rohit has said that we need to keep pace with the game. That's as good as saying outdated cricket. Look, the team is ranked number 2. They've had a lot of bilateral success. मेरा बस ये मानना है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपको थोड़ा क्या कहूँ आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है ना. So that means if you have a bad start, maybe you recalibrate how things are going. This whole मारना है मारना है मारना है, ये मारने के चक्कर में भैया रिस्क तो है ना. एक बंदा मारो, शुभमन गिल से कहो भैया तुम खेलो, तुम 40-42 ओवर खेलो, मैं रोहित शर्मा मैं बॉल को मारूं, क्योंकि शुभमन गिल ने दिखाया है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं. रोहित शर्मा with all his experience, with his age, being a senior player, it's a bit unfair to expect him to bat 40 overs, not consistently. As much as we'd all love to see him, it's unfair. Rohit Sharma has done some fantastic things in an India blue jersey. Let's not forget that. 3 double hundreds, a lot of 150 plus scores. Right now, it's a perfect time to hand on the baton to Gill. Gill, तू अगले 10-12 साल तक कहीं नहीं जा रहा, तू इस टीम को लीड करेगा फ्यूचर में, तू लंबी पारी खेल. मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छे स्टार्ट्स दूं, which I think we saw in the Asia Cup. Rohit was the aggressor, so I have some faith from Rohit still. ये सीरीज हो ही क्यों रहा है जब आपका वर्ल्ड कप नेक्स्ट 15 डेज में. जाहिर सी बात है भाई, आप ये वर्ल्ड कप से लेने देने नहीं है. दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू एफटीपी. नए एफटीपी के लिए आपको सीरीज खेलना पड़ता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो टीम मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप उठा के जाएगी, जिस टीम से आपका पहला वर्ल्ड कप मैच है, नहीं चेन्नई में, नहीं, you need to be playing them. It's much better that they're playing the number 1 team. ऑस्ट्रेलिया ने फालतू टीम भेजा नहीं. ऑस्ट्रेलिया हैव सेंट देयर नंबर 1 वर्ल्ड कप टीम, और यहां हम थोड़े डर के हम 4 प्लेयर को रेस्ट कर रहे हैं. ये बेहतरीन मौका था अपने वर्ल्ड कप फेवरेट्स के सामने, जिस टीम से आपकी पहली मैच है, इस टीम के साथ अपना फुल टीम खेलकर टक्कर देने का. आपने नहीं किया. आपकी सोच मेरे हिसाब से नेगेटिव है. India 5, 6, 7 compared to other teams. No one is power hitter. Barring Hardik Pandya, yes, you're right. There's no power hitter. Was Samson excluded to keep Rahul inside the team and giving Rahul gloves have got his future out of 50 overs at T20 to some extent? I think so, Nihar. I am watching your show and answer every time, hoping you'll do the same and welcome from the venue. So, अगर आप नहीं जानते, you are not allowed to shoot any form of video, चाहे live हो, चाहे recorded हो, ground के अंदर. आप करेंगे तो आपको बाहर फेंक देंगे, और आपकी जो मीडिया पास है वो वहीं वो कैंसिल कर देंगे. इट्स अ रूल, एंड दिस हैज बीन अ रूल फॉर मेनी मेनी इयर्स. तो अनफॉर्चुनेटली आपको स्टेडियम के बाहर, यू हैव टू बी आउटसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी to do videos. Like I said earlier on a couple streams, I was supposed to cover 17 World Cup matches. Now it's down to 11, of which possibly 2 I won't be doing because I'm shooting a very big web series in Amritsar and Mumbai. So right now, of the 11 matches, it's down to 9 right now. Delhi, Bangalore, Mumbai. I'll be doing some kind of video outside, but I can tell you, unlike the cricket that I've covered in England, New Zealand, even Sri Lanka, bringing you any kind of live broadcast stadium के बाहर मैच दे पे ना भाई बहुत बहुत मुश्किल है. भीड़ जो होती है ना, but I will try to, from the 9 or hopefully 11 matches that I'm at, I will try to bring you some kind of analysis. But like I said, we're not allowed to shoot. Only the host broadcasters can shoot inside the stadium. So जो भी है कोशिश पूरी करूंगा मैं. Possible question for the future. Can Jaiswal get into ODI? Definitely, definitely. Gill and Jaiswal will open for 10 years together. बिल्कुल, बिल्कुल. आपके दिल से केएल राहुल का नाम लेते इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे हैं. हाँ, क्योंकि केएल राहुल मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में अब तक 42 तकरीबन मैच खेल के उनके पास वो आंकड़े नहीं है. T20 में जितने खराब वो थे पिछले 1.5 साल से, कोई इंडियन प्लेयर नहीं था. मैं तो बहुत महीनों से कह रहा हूं, मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि इंडिया के लिए केएल राहुल से बेहतर नंबर 5 ओडीआई प्लेयर नहीं है. केएल राहुल का असली रोल, असली जो योगदान है, वो है वनडे फॉर्मेट में नंबर 5 पे आकर ये पारी को संभाल सकते हैं. इनके आंकड़े देखिए, इनके आंकड़े बेहतरीन हैं. इंडिया के पास नंबर 5 पर इनसे ज्यादा सफल कोई बल्लेबाज नहीं है. ऊपर से ये कीपिंग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन मेरा ये मानना है कि 5 महीने के ब्रेक के बाद जब वो आए हैं इंजरी के बाद, वर्ल्ड कप में शायद मैं उन्हें कीपर के तौर पे ना खिलाऊं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि केएल राहुल नंबर 5 पे आकर आपके लिए इनिंग्स फिनिश करेंगे, कभी कभार पारी संभाल लेंगे, मैच फिनिश करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जो खिलाड़ी 5 पे खेलता है उनका काम है मैच खत्म करना. तो इस उम्मीद से केएल राहुल को देखना
कि बेचारा आकर मैच खत्म करे, स्पिन अच्छी खेलते हैं, छक्के लगाएं पारी खत्म करने में और उसके बाद कीपिंग करें। आई थिंक इट्स अनफेयर ऑन केएल राहुल। और अभी आपने उस इंसान के ऊपर अपने कैप्टनसी का बोझ डाला है। दैट्स माय इशू विद केएल राहुल। आई स्टिल से ही इज इंडियाज बेस्ट नंबर 5 इन वन डेज। हाउ इज द हाइप? नहीं भैया, ठंडा है, मार्केट ठंडा है, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट ठंडा है भाई। आप मैं हम तो फिर भी जज्बाती लोग हैं, हम दिल से फॉलो करते हैं, हम दिल से कमेंट करते हैं। देयर इज जीरो हाइप अबाउट दिस वर्ल्ड कप, जीरो, which is why I'm saying it's the last relevant World Cup. Spark test, Kale, Rahul. Chalo, I have to go. I've got another show coming up. How much does the decreasing number of tri-series knockout tournaments impact? Arun Rao, good question. I've answered it many times. It's a big factor. Absolutely. Do you think British Shaw will come back to India? No. Shaw is finished. Mumbai lobby को संजू पसंद नहीं है. And yes, I have said this before. Anyways, thank you all. Love you all. Got to go. You can see me today at 4 o'clock on News 9 Live. The 2 o'clock show was cancelled क्योंकि मोदी जी बात कर रहे हैं. तो उस चैनल के प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया कि सर आप 4 बजे आ सकते हैं. मैंने कहा मैं हाजिर हूं. तो come and see me on the News 9 Live news channel at 4 o'clock. Have a great day. Thank you all for watching. Jai Hind.